Hello everyone, welcome to Pro Trader Talks. Welcome to the two-part series on addictive trading. ये दो पार्ट सीरीज में हम बात करेंगे what is addictive trading, how do you recognize addictive trading, and what can you do to resolve yourself out of addictive trading. I switched from being a corporate lawyer to a stock trader 14 years ago. And what I most love about trading is that it exercises the brain and the willpower. It involves an ongoing analysis and problem-solving skills. And it also requires the steady development of performance-based skills. I'm sure कि हर कैटेगरी के प्लेयर्स, आप जो भी खेल लो, मतलब चेस प्लेयर्स है या इवन पोकर प्लेयर्स है, इन सभी को सेम बेनिफिट्स एक्सपीरियंस होते हैं. टॉक टू एनी सक्सेसफुल एथलीट एंड यू विल फाइंड आउट कि ये सारे एथलीट्स ने अपने आप को कल्टिवेट किया है और अपने माइंड को कल्टिवेट किया, नॉट जस्ट देयर बॉडीज. बट द फैक्ट इज दैट देयर आर टाइम्स व्हेन ट्रेडिंग बिकम्स अ व्हीकल फॉर डिस्ट्रॉइंग one's mind and soul. Of course, you will never hear this from brokerage firms or even trading publication or anyone else talking about this problem. इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता because their common aim is to keep the public trading and buying all the trading related products. But the fact is that एक चीज़ जो मैं बोल सकती हूँ इतने सालों से इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ काम करने के बाद कि एक प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही कॉमन है इन सारे ही ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में कि फॉर सो मेनी पीपल ट्रेडिंग बिकम्स एन एडिक्टिव एक्टिविटी. एंड ओ यस, बहुत सारे अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग कोचेस, साइकोलॉजिस्ट बात करेंगे कि डिसिप्लिन लूज़ करना ही सबसे खतरनाक बात होती है, डिसिप्लिन लूज़ नहीं करना चाहिए. ये लोग डिसिप्लिन वर्ड के नीचे एडिक्शन वर्ड को दबा देते हैं और हमें ऊपरी सल से लगता है कि डिसिप्लिन लैक हो रहा है. बट द रियल प्रॉब्लम इज़ दैट एडिक्शन इज़ समथिंग दैट सेट इन. एडिक्शन छा गया है. एंड बिकॉज डिसिप्लिन और एडिक्शन में क्या फ़र्क है? डिसिप्लिन इज़ समथिंग दैट यू वर्क ऑन. आपको डिसिप्लिन चाहिए, बट एडिक्शन इज़ समथिंग जो आपको निकालना है. यू नीड टू गेट रिड ऑफ. One is to work on and one is to get rid of. And many times it happens that loss of discipline in the market are related to addictive patterns of behavior. Always, it's one upon the other. तो चलिए जानते हैं कि एडिक्शन होता क्या है. And addiction occurs when any activity provides a strong source of stimulation which over a period of time, लंबे समय तक अगर चलता रहा तो साइकोलॉजिकल एंड समटाइम्स इवन फिजिकल डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है. जनरली हम कोई भी बिहेवियर को लेबल एडिक्शन as we label them as addiction when people seek out the activity in spite of them knowing कि ये एक्टिविटी करने से उन्हें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे. सो इट्स लाइक ऑल इन ऑल एडिक्शन इज योर इनएबिलिटी टू स्टॉप द एक्टिविटी even when you know that these consequences are going to interfere with your life, and that marks any kind of addiction, be it trading or anything else. ये होता है एडिक्शन का डेफिनेशन. जस्ट टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट कि आपकी लाइफ में कौन सी एक्टिविटी एडिक्टिव एक्टिविटी बनने के निशान दिखा रही है, एंड स्पेसिफिकली सो व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग. बिकॉज ये सिर्फ हम चाहे ट्रेडिंग की बात करते हैं यहाँ पे, बट दिस इज़ रिलेटेड टू सो मैनी अदर एडिक्शन. अगर रिसर्च फैक्ट्स देखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा एडिक्शन तो पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग का है, जहाँ गैम्बलर्स विद एक्सपीरियंस डायरेक्ट negative consequences as a problem, as a thing of gambling. Problem of loss of finances, loss of mental peace, their health, whatever. Next addiction is alcohol abuse, substance abuse and addiction. These are major addictions. The worst part is that the rates of depression are very much high amongst people with addiction than those of the general population. और यही बात indicate करती है कि people are using these addictive activities to medicate themselves. और ये वो medicate इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो डिप्रेशन के दर्द से गुजर रहे हैं.
That is why they need to medicate themselves with addiction. So even if we assume that traders do not have more frequent addictive behaviors than the general population, for instance, एक बार assume कर लेते हैं, statistics हमें ये बताता है कि in all likelihood, nearly हर 10 ट्रेडर में से कोई एक ट्रेडर ऐसा है जो डायग्नोज हो सकता है for addictive problems. And that's a huge number, guys. So we now know the meaning of addiction, कि addiction होता क्या है. And we also know कि addiction से problem क्या हो सकती है, right? So now let's understand what can we do about the issue. The first step in dealing with any addictive pattern is to, of course, identify कि there is a problem in the first place. और लेकिन identify करेंगे कैसे? How do we identify? There are a few questions that you can ask yourselves. और ये जो questions पूछ के हमें क्ल्यू मिल सकता है कि क्या हम एडिक्शन के रास्ते जा रहे हैं या नहीं जा रहे. So here are a few questions that you can ask yourself. Have there been times where I've told myself to stop trading, but I still found myself placing trades anyway? Have my trading losses created problems for me in my relationships, or have they caused me financial problems? Do I find myself trading all the time by putting positions with too large sizes, or while trading during periods when there is no movement happening? Have people close to me, मैंने आसपास के लोग क्या मुझे ये कहते हैं कि मुझे I should shut down trading? Is the pain from losing more extreme than the satisfaction from winning? Do I find my moods fluctuating with my profit and loss account? Do I trade simply out of boredom? Do I find myself preoccupied with trading even outside market hours? And do I do this at the cost of do I trade at the cost of work and relationships? ये सारे जो questions में, if you answered yes to 3 or more of them, I would strongly think that trading has become a problem for you. और एक चीज़ अगर आप notice करेंगे, तो ये सारे जो questions जो हमने discuss किए, इन सारे questions में you could easily substitute the word thinking or gambling for the word trading. तो भी वो same रहेगा, because the dynamics of addiction are the same across the board. So, having asked these questions to yourself and having received a lot of answers in trading, the next question to ask ourselves is, how does one deal with addictive trading? Guys, this is a topic for the next Pro Trader Talks. So stay tuned for part 2 of this talk, where we'll talk about how do you deal with addictive trading. I wish you joy and abundance in all you do. Thanks for watching, guys. Usually we get stuck in life because of one of these 3 things. First is the limiting beliefs that we carry. Second is the negative patterns. And third is a scarcity mindset. Do you feel like breaking free of all these 3 things? Do you feel that you want to live a life which is due to your highest potential? If yes, check out this 3-day program that we're doing called the Ultimate Breakthrough. It promises to be a live immersive experience. And we're super excited about it. To know more details, go to www.tublife.in.